Hello students, in the next lecture of our cloud computing, today we are going to start about SLA, that is termed as Service Level Agreement. जैसा कि हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली क्या होती है? इट्स एन प्रोसेस और यू कैन से टेक्नोलॉजी शेयरिंग वेयर ए क्लाइंट रिक्वेस्टेड फॉर सर्टेन रिसोर्सेज। एक क्लाइंट जो है एक सर्विस प्रोवाइडर से उसके रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के लिए रिक्वेस्ट करता है और इन लिeu ऑफ दैट ही यूज टू पे फॉर दैट, पेमेंट करता है उसके बदले में उसका। तो ये जो सारा प्रोसेस है, दैट हाउ यू मेक ए रिक्वेस्ट एंड हाउ योर रिक्वेस्ट इज टू बी फुलफिल्ड, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी सर्विस लेवल एग्रीमेंट। बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग में हम क्या कर रहे हैं, हम एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से उसकी सर्विसेज ले रहे हैं। तो उस सर्विसेज को लेने के लिए हमें सर्विस लेवल एग्रीमेंट लेना पड़ता है। एग्रीमेंट क्या होता है? अगर हम एग्रीमेंट की बात करें, एग्रीमेंट इज अ डॉक्यूमेंट वेयर टू पार्टीज आर रेडी ऑन सर्टेन कंडीशंस। इन दो व्यक्तियों के बीच एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसपे सेवा शर्तों पे सहमति बन जाए इज रेफर्ड एज एग्रीमेंट। सो ए सर्विस लेवल एग्रीमेंट इज ए कॉन्ट्रैक्ट between a business and its customer with emphasis on the details that the two parties have agreed to in a transaction. In cloud computing, all service level agreements were negotiated between a client and a service consumer. मतलब क्या हुआ कि क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाइंट और सर्विस कंज्यूमर के बीच सभी सर्विस लेवल एग्रीमेंट पर बातचीत होती है। Before availing the services, a negotiation process is to be carried out. Negotiation process क्या होता है? कस्टमर कहता है कि मेरी रिक्वायरमेंट ये है, क्लाइंट कहता है कि आई कैन प्रोवाइड दीज सर्विसेज, इनके लिए इतना पेमेंट करना पड़ेगा। तो दोनों के बीच में जहाँ जिस लेवल पे एग्रीमेंट हो जाता है, दैट इज रेफर्ड एज नेगोशिएशन। नेगोशिएशन का मतलब समझते हैं ना आप लोग, कि जब जहाँ पे दोनों पक्षों की सहमति हो जाए उसको नेगोशिएशन कहा जाता है। कि क्लाइंट कह रहा है कि नहीं इसमें ये सर्विस और जोड़ दो, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर कह रहा है कि अगर सर्विस जुड़ेगी तो उसके लिए तुम्हें एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। अगेन द क्लाइंट इज सेड कि पेमेंट इज दैट व्हाट यू आर गिविंग इन द पैकेज बट ऐड सम एक्स्ट्रा फीचर्स इन दैट। ठीक है, तो उस नेगोशिएशन प्रोसेस के बाद जो फाइनल डिसीजन होता है दैट इज रेफर्ड एज सर्विस लेवल एग्रीमेंट। यूजुअली क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स की जो सर्विसेज होती हैं दे आर स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज मतलब सर्विसेज फिक्स्ड हैं एंड द कस्टमर कैन अवेल दो सर्विसेज बाय पेइंग ए सर्टेन अमाउंट until and unless the customer becomes a large consumer। लार्ज कंज्यूमर का मतलब क्या है कि मैं उसकी बहुत सारी सर्विसेज को अवेल कर रहा हूँ और उन सारी सर्विसेज को अपने हिसाब से कस्टमाइज करना चाहता हूँ। तो जब तक मेरा एक ऑफर बड़ा नहीं होगा, सामने वाला जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है ही इज नॉट गोइंग टू कस्टमाइज द सर्विसेज एज पर माई रिक्वायरमेंट। तो until and unless I am a simple customer, I will pay for the standardized service, but once I become a big service consumer, or you can say I am availing the services on a large scale, then only I become a consumer whose services can be customized by the service provider. These type of SLA that an organization can use depends on many significant aspects. Some are targeted at individual customer groups, others discuss issues relevant to entire companies. Due to this reason, because the needs of one user differ from one of the other. As this statement says, ऐसा जरूरी नहीं इस रिक्वायरमेंट, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है? बेसिकली रिक्वायरमेंट इसलिए होती है कि एक कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्लाउड सर्विस के लिए डिफरेंट होती है। वन इज एक्सेसिंग द हार्डवेयर रिसोर्सेज, वन इज अवेलिंग द नेटवर्किंग सर्विसेज। तो जैसी जिसकी रिक्वायरमेंट होगी उसी के हिसाब से एग्रीमेंट को फाइनलाइज किया जाएगा और कंडीशंस को नेगोशिएट किया जाएगा।
So the negotiation process mainly depends upon the services required by the customer. Got it? Now, when the agreement is finalized, there are certain points which needs to be emphasized. The first thing is what is required, means what services the customer is requiring from the cloud service provider. What is the expectations of the client from the cloud service providers, that is also need to be catered. What cost he is going to pay if he is going to avail all these services. Once these all things are clarified, then the compromise and the negotiation process carried out. जब सारी बातें क्लियर हो जाती हैं कि मेरी रिक्वायरमेंट ये है, इस रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये कार्य होना चाहिए, इस कार्य के लिए इतनी कॉस्ट लगेगी, उसके बाद कस्टमर और क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के बीच नेगोशिएशन और कॉम्प्रोमाइज स्टार्ट होता है. कहीं पे कस्टमर कहेगा कि चलो ये सर्विस नहीं है, आई कैन मैनेज, बट यू नीड टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ माई सर्विस फॉर दैट. And finally, the main point is reality versus perception. Means what we are assuming is called perception. कि ये क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से मुझे ये सर्विसेज मिलेंगी, लेकिन जब वो सर्विसेज मैं अवेल करूँगा रियलिटी में, well at that time whether they are accountable for the amount which I am going to pay, that things also needs to be considered always. When we talk about key components of an SLA, means whenever a service level agreement is to be designed, is to be agreed upon, जब एक सर्विस लेवल एग्रीमेंट क्लाइंट और क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के बीच फाइनलाइज किया जाता है, तो उसमें जो की कंपोनेंट्स होते हैं दे आर लिस्टेड है. फर्स्ट वन इज एग्रीमेंट ओवरव्यू. एग्रीमेंट क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशंस, कंडीशंस, किस सर्विस के लिए कितना अमाउंट पेबल होगा, अगर सर्विस प्रोवाइडर सर्विस पे नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है तो उसके लिए क्या पेनल्टी होगी. दिस ऑल थिंग्स आर लिस्टेड इन डिटेल स्ट्रक्चर. डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्विसेज, क्या क्या सर्विसेज होंगी. एक्सक्लूजन मीन्स क्या सर्विसेज नहीं होंगी, इज रेफर्ड एज एक्सक्लूजन. सर्विस परफॉर्मेंस, इट ऑल्सो रेफर्स द थिंग्स विच वी हैव डिस्कस्ड. वंस वी हैव डिलीवरिंग द सर्विस, हाउ विल बी द आउटपुट. कहने के लिए मैंने आपको कह दिया कि आप 2 GB डेटा एक्सेस कर लीजिए पर डे मेरा, लेकिन नेट की स्पीड ही नहीं आ रही है. व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ 2 GB? मेरा डेटा सारा बचा हुआ है, आई एम अनेबल टू एक्सेस द इंटरनेट फैसिलिटी. So that is more concern. Redressing means if I am not satisfied with a particular type of service, I will again ask to the cloud service provider that this service needs to be readdressed. It is not working as per our negotiation. Stakeholders is basically with reference to if a company is using the services of a cloud service provider, what advantages is going to for its stakeholders. Stakeholders कौन होते हैं? कंपनी के एम्प्लॉइज, कंपनी के शेयर होल्डर्स, they are all our internal and external employees are referred as stakeholders. तो अगर मैं किसी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से क्लाउड सर्विसेज ले रहा हूँ तो मुझे उसके बदले में मेरे स्टेक होल्डर्स को क्या एडवांटेज होगा, ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है ऑफ SLA. सिक्योरिटी इज अगेन मेन कंसर्न बिकॉज एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, क्लाउड में क्या होता है, क्लाउड सर्विस में ऑल द डेटा इज टू बी स्टोर्ड ऑन क्लाउड. तो अगर मैं एक ऑर्गेनाइजेशन हूँ जिसका सेंसिटिव डेटा है तो सिक्योरिटी इज मेन कंसर्न. रिस्क मैनेजमेंट एंड डिजास्टर रिकवरी, इफ इन केस the data is to be hacked or lost, how the data is to be recovered, that's again of concern. Service tracking and reporting, whether there is any process by which periodically the performance of the services can be tracked. Periodic review and change process, if over a time period a service is not performing as per negotiated document, हमने वादा किया था कि हम ये सर्विस इस प्रकार से देंगे, लेकिन वो सर्विस नहीं चल पा रही है अपने हिसाब से, तो उसको रिव्यू किया जाएगा और रीडिज़ाइन किया जाएगा. वंस
the contract is over, or if I am not satisfied with the services provided by the cloud service provider, what will be the termination process? That has to be explicitly written in the SLA. And once all these points are verified, then finally this SLA is signed by both the parties, means the customer and the cloud service provider. So this is basically the process of SLA, where we start from agreement overview, description of services, exclusion, service performance criteria, readdressing stakeholders benefit, security concern, risk management and disaster recovery issues, service tracking and reporting, periodic review of services, and changes required if possible. What would be the termination condition from both the ends if one of the parties is not satisfied, either in terms of payment or in terms of services? And finally, the SLA is signed by both the parties and it is implemented between those two parties. This is a pictorial presentation that customer is looking for a cloud service provider. He overview the offers provided by the service provider, negotiation is carried out, and finally the services are taken from the cloud service provider if negotiation is carried out and both the parties are satisfied on the terms and conditions of the agreement. Now when we talk about SLA can be categorized in three categories: customer based SLA, service based SLA, and multi-level SLA. We are going to discuss each one by one. The first one is customer SLA. As its name suggests, this service level agreement is specially designed for a single customer. That single customer can be a company or can be a single user. It depends upon the requirement. So this agreement is used for individual customer and contains all relevant services which the client requires while leveraging only one contract. Leveraging means advantages. So this contract is basically between a single user or single organization and the cloud service provider. It contains details regarding the type and the quality of service that has been agreed. This agreement, इसको सिंपल से एग्जांपल समझो, आप सब लोग किसी न किसी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर का सिम यूज करते हो. वन हैज जियो, वन हैज एयरटेल, वन हैज वोडाफोन. हर सर्विस प्रोवाइडर का अपना अपना एक अलग प्लान है. ठीक है, कोई 699 में 84 दिन दे रहा है, कोई 599 में दे रहा है, कोई 1.5 GB पर डे दे रहा है, कोई 2.5 GB पर डे दे रहा है. तो देयर इज ए एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ कंडीशंस कि अगर आप 599 का प्लान लेते हैं तो आप 84 डेज तक 2 GB पर डे प्लस फ्री वॉइस कॉलिंग कर सकते हैं. दिस एग्रीमेंट इज शोन एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड देन यू आर गोइंग टू बाय दैट. अब किसी एक दूसरा प्लान भी है, दूसरे कस्टमर को पसंद आ रहा है कि 799 का प्लान लीजिए, 2 GB की जगह 1.5 GB मिलेगा, वॉइस कॉल मिलेगी, लेकिन साथ में डिज्नी का हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा. तो ये कॉन्ट्रैक्ट डिफरेंट हो गया. तो बेसिकली कस्टमर बेस्ड SLA इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए कस्टमर एंड द सर्विस प्रोवाइडर. और जो कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन होगा उसी पे वो कैरिड आउट होगा. अब आपने 2 GB का प्लान ले लिया, लेकिन आप जब इंटरनेट सर्फ करते हैं, व्हाट इज दैट, यू आर फेसिंग दैट नेट इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली. तो आप क्या करेंगे, आप कस्टमर को कॉल करेंगे कि भाई मैंने ये प्लान एक्टिवेट किया था लेकिन मेरा तो नेट ही नहीं चलता है, स्पीड बहुत स्लो आती है. तो देयर विल बी सम रेक्टिफिकेशन. वो कहेंगे कि सर ये सेटिंग्स चेंज कर लीजिए, हम नई सेटिंग्स भेज रहे हैं. तो दैट इज रेफर्ड एज रीएड्रेसिंग. तो जो सारे पॉइंट्स हैं जो हमने ऊपर कवर करे हैं वो सारे इन कॉन्टेक्स्ट में कैरिड आउट रहते हैं. आप
रिचार्ज तभी कराते हैं जब आप सेटिस्फाइड होते हैं कि हाँ इसमें 2 GB पर डे मुझे मिलेगा, मैं फॉलो कर लूँगा, मुझे डिज्नी का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है या मुझे कोई और सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, राइट? एंड वंस इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द सर्विसेज ऑफ ए सर्विस प्रोवाइडर, व्हाट यू यूज्ड टू डू, यू पोर्ट योर नंबर कि मैं वोडाफोन से परेशान हो गया भाई, इसका सिग्नल नहीं आता, मैं तो जियो का लूँगा। तो दैट इज दैट यू आर terminating the conditions, the services of one service provider, cloud service provider, and you are moving to another one. So what the cloud service providers used to do, they gather expectation from customers, then define SLA. सबसे पहले वो प्लानिंग करते हैं कि कस्टमर को क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से वो अपने SLA डिज़ाइन करते हैं। SLA डिज़ाइन करने के बाद दे प्रोवाइड ऑफर टू द कस्टमर्स, customer is accepted that offer, then service expectation is done and service is delivered to the customer. Plan and do, check that service performance is measured. Measured means they used to carry on कि यूज़र को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, उसका डेटाबेस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, वो जो सर्विसेज ले रहा है ही इज़ फुल्ली सेटिस्फाइड और नॉट, वो स्विच तो नहीं कर रहा है या वो GB को डेटा को कंज्यूम कर पा रहा है, दैट हैज़ टू बी मॉनिटर्ड। और अगर हमें वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आती है तो वी यूज टू टेक corrective actions if SLA targets are not fulfilled. What this means, एक्ट का मतलब क्या है कि मैं ऑफर दे रहा हूँ लेकिन फिर भी मेरे कस्टमर नहीं बढ़ रहे हैं, that means there is some deficiency in my agreement and it needs to be redesigned. So when we design customers based CLA, this 4-step process, PDCA, plan, do, check, act, will always needs to be designed carefully. These all statements are which we have already discussed. A plan is basically chosen by studying all the aspects. तो आप अच्छे से डिज़ाइन स्टार 1 2 3 हैश करते हो और आपके पास ऑफर आते हैं कि 599 में है, 600 में है, 700 में है, तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार एक पर्टिकुलर प्लान को चूज करते हैं। वो प्लान, वो एग्रीमेंट पहले से ही सर्विस प्रोवाइडर ने आपके सामने ऑफर दिया हुआ है। द सेकेंड टाइप ऑफ SLA सर्विस इज सर्विस बेस्ड SLA। सर्विस बेस्ड SLA क्या होता है? Here the number of customers are multiple and the service is fixed. The service is same. डिफरेंस समझने की बात है। कस्टमर में क्या था? The customer are different means but one at a time and the service is varied from one customer to another customer. यहाँ पे क्या है? The service is same but the customers are different. That is referred as service based LA. बेस्ट एग्जाम्पल इज, फॉर एग्जाम्पल आपने एक HP का लैपटॉप खरीदा एंड यू फेस सम प्रॉब्लम, व्हाट यू यूज्ड टू डू, यू कॉल ऑन द टोल फ्री नंबर कि मुझे ये दिक्कत आ रही है, तो दे ट्राई टू ट्रबल शूट योर प्रॉब्लम बाय ऑनलाइन क्वेरी। इसी तरह उस HP के कॉल सेंटर पे नंबर ऑफ पीपल्स आर कॉलिंग अगेन एंड अगेन, तो व्हाट दे आर डूइंग देयर, दे आर सिटिंग देयर टू सोल्व देयर योर प्रॉब्लम बाय कॉल सेंटर प्रोसेस। तो वहाँ पे क्या है? सर्विस लेवल क्या है? सर्विस इज ए कॉल सेंटर विच इज केटरिंग ऑल द कस्टमर्स एंड द कस्टमर्स आर डिफरेंट बट सर्विस इज सेम, दैट दे आर सिटिंग ऑन द कॉल सेंटर टू प्रोवाइड यू सॉल्यूशंस फॉर द प्रोडक्ट विच यू परचेज फ्रॉम द कंपनी। ठीक है, तो दीज काइंड ऑफ सर्विसेज आर रेफर्ड एज सर्विस बेस्ड SLA। This SLA is a contract that includes one identical type of service for all its customers. The service is limited to one unchanging standard. It is more straightforward and convenient for vendors. For example, using a service-based agreement regarding an IT help desk would mean that the same service is valid for all end users that sign the service-based SLA. When we talk about key points in service-based SLA, the first point is service availability, defect rates, technical quality, security and business results. अगर हम इनको समराइज करें तो सबसे बस यही समझ लीजिए कि आपने कॉल सेंटर पे कॉल किया एंड इफ नोबडी इज पिकिंग अप योर कॉल देन देयर इज नो मीनिंग ऑफ गिविंग टोल फ्री नंबर, एंड इफ a person is picking up your call but unable to satisfy your query, there is no service delivered at all.
Also, your credentials should not be shared, should not be compromised. That is a security concern. And whether this solution is increasing my customer base or not. कि जो मैं बिजनेस रिजल्ट्स का मतलब क्या है कि जो मैंने सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ उससे मेरे पोटेंशियल कस्टमर सेटिस्फाइड हो रहे हैं कि नहीं, अगर हो रहे हैं देन ओनली द ऑब्जेक्टिव ऑफ माय सर्विस बेस्ड SLA इज टू बी फुलफिल्ड. Now the third category of SLA is multi-level SLA. It is basically a combination of customer, service and corporate. It has basically three categories: corporate SLA, and customer SLA, then service SLA. Within multi-level, three levels are there. Corporate SLA क्या है? That I am providing cloud services to a particular organization by discussing a thorough discussion. सारी इफ्स एंड बट्स को रखते हुए कि कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है, कितना नेटवर्क चाहिए, कितनी बैंडविड्थ चाहिए, कितनी सर्विसेज सर्वर्स चाहिए, वो सारा डिटेल डिस्कशन होता है. तो इसमें हार्डली चेंजेस की रिक्वायरमेंट होती है बिकॉज बोथ द कंपनीज एंड द सर्विस प्रोवाइडर हैव ए बिग डिस्कशन बिफोर फाइनलिंग द SLA. तो इस समझौते में कोई लगातार परिवर्तन नहीं होता क्योंकि इसमें मुद्दे आमतौर पर अपरिवर्तित नहीं होते. पहले ही थोरोली डिस्कशन हुआ था, हर पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन होता है, देन ओनली द एग्रीमेंट इज टू बी साइन. अब कॉर्पोरेट क्या चाहता है? वो चाहता है कि उसके एक स्पेसिफिक ग्रुप को स्पेशल सर्विस दी जाए. फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ मेरी एक कंपनी है जिसमें एक डिपार्टमेंट है जो मार्केटिंग है, जिसको 24 घंटे ट्वीटिंग करनी है या ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन भेज, मैं चाहता हूँ कि उसके लिए सर्वर हमेशा बिजी होना चाहिए. ये डेवलपमेंट टीम है तो उसके लिए बैंडविड्थ स्पेशली एलोकेट होनी चाहिए. तो दैट इज रेफर्ड एज कस्टमर लेवल. दैट विद इन द कॉर्पोरेट स्पेशल सेक्शन इज गिवन द स्पेशल फैसिलिटी कि मेरे जो IT वाले बंदे हैं उनको कुछ अलग से एक सर्वर की फैसिलिटी अलग होनी चाहिए या डेटाबेस कनेक्टिविटी अलग होनी चाहिए. इट कैन बी ट्रीटेड इन सम वन मोर हायर सिक्योरिटी लेवल. कि मैंने सिक्योरिटी लेवल तो पूरी कंपनी के लिए लिया हुआ लेकिन एक सोफिस्टिकेटेड सर्वर के लिए जिसपे मेरे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं उसमें मुझे डबल लेवल चाहिए. तो दिस काइंड ऑफ सर्विस इज रेफर्ड एज कस्टमर लेवल विद इन द मल्टी लेवल. And if you talk about service level within the multi-level, that service level is basically what? A particular service is availed for a specialized group of employees or group of customer within the organization. यानी कि कॉर्पोरेट कंडीशंस तो सेम है ही हैं लेकिन उसमें से एक स्पेसिफिक ग्रुप ऐसा है जिसके लिए मैंने कोई एडिशनल फीचर्स अलग से मांगे हुए हैं. एक स्पेशल डिपार्टमेंट ऐसा है तो उस तरह की सर्विस को हम सर्विस लेवल SLA कहते हैं. तो मल्टी लेवल SLA की बात करें तो की पॉइंट्स आर रेस्पॉन्स, रेजोल्यूशन, सपोर्ट, वेटिंग पीरियड फॉर थर्ड पार्टी एंड यूज ऑफ नॉलेज बेस. मीन्स रेस्पॉन्स का मतलब क्या है? How the service is responded whenever my clients, my employees are requesting what a particular service. Resolutions, how the services are responding in lieu of if some changes to be required or something else is to be required. Third thing, whether the cloud service provider is providing the support and how. The third party means if there is an involvement of third party in the entire service process, whether the third party is to be satisfied or not satisfied. And finally, use of knowledge base. Knowledge base means, what is knowledge base? Knowledge base is nothing but a data repository and how the cloud services provider is using that data repository to satisfy the needs of the customer. So these three categories which we have discussed are basic components of an SLA, that is service level agreement of
cloud service provider for the facility of students, both the Hindi medium and English medium. I have put it the slides in both the manners, so you can choose as per your convenience and post your query at the end of your video. Fine. Thank you.